ऑलराइट, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले जो है वो स्टार्ट कर दिया है, राइट। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, हमने जो है इस सेशन का स्टार्ट 5 मिनट पहले कर दिया है। प्लीज मेक श्योर जल्दी से हम अपने पूरे नेटवर्क को जो है एक रिमाइंडर मैसेज दें, बिकॉज बहुत ही ग्रैंड पर्सनैलिटी जो है वो हमारे बीच में है। वी विल इंट्रोड्यूस कि कौन है, और हम बताएंगे कि क्या चीजें जो है आज डिस्कस होने वाली है। एंड एक जो है काफी लोगों का मैसेज मेरे पास में आ रहा था कि क्या ये इंग्लिश में सेशन है या हिंदी में है, तो ये सेशन जो है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। और प्लीज मेक श्योर आपकी पूरी टीम अटेंड करे, और जल्दी से हम लोग सभी मिलके अपने पूरे टीम के साथ में जो है एक रिमाइंडर मैसेज जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास में अभी अराउंड 7 मिनट्स है, वी स्टार्टेड बिफोर मिनट्स, और तब तक आप रिमाइंडर मैसेज अपने नेटवर्क पे डाल दीजिए। Very good morning, all, and we are live on YouTube. And I'm requesting all of you to kindly give a reminder message on your team. And हमारे जो guest speakers हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं. We will start the session just in nearly 5 minutes, right? And till then, please keep reminding your team. ज्यादा लोगों को जो है इनवाइट कीजिए सेशन को अटेंड कर लीजिए, सेशन को अटेंड करने के लिए. दिस सेशन विल बी अ हिस्टोरिक सेशन, राइट. तो प्लीज मेक श्योर पूरी टीम जो है वो आपकी अटेंड करे, और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग्स जो है वो हम लोग एडी मैम से ले सके. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ये सेशन जो है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होने वाला है. और हमारे जो दो को होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, सभी हमारे बीच में आ गए हैं. अगेन पूरी टीम को इन्वाइट कीजिए एंड रिमाइंडर मैसेज डालना स्टार्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. Hello, Salesmaster Arun. Good to see you. I see your postings on the YouTube all the time. You're so busy, you know. But anyhow, awesome to see you. Thank you, Eydie ma'am. Wonderful or great session. I think we will receive you from you. All right. So once again, very good morning to all of you. And we left around 2 minutes. 2 से 3 मिनट हमारे बीच में कुछ रह गए हैं. We will start the session at 9:30 p.m. sharp, because there are too many things जो हमें डिस्कस करनी है. बहुत सारे इनपुट्स जो हैं हमें एडी मैम के थ्रू मिलने वाले हैं. And I am personally so excited because I have seen her journey, and we are continuously in contact with Eydie ma'am, and she is so humble and she is so supporting. And please make sure जो जिनके पास में जो भी लिंक है, YouTube लिंक है या फिर आपके पास में Zoom लिंक है, सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लीजिए. वी विल स्टार्ट द सेशन इन नेक्स्ट 3 मिनट्स. थैंक यू सो मच. संध्या जी का मैसेज है, आवाज नहीं आ रही है. संध्या जी आप माइक कनेक्ट कीजिए, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है. All right, so I think we should start the session, right? So very good morning to all of you, and today we all are so excited. लोगों के मैसेजेस और कॉल्स मेरे पास में आ रहे थे जब से मैंने ये पोस्टर सर्कुलेट किया.
And this is all because we have one of the most dynamic personality from Atomy. And बहुत सारे लोग जानते हैं personally because I think many of us have seen her in I think absolute session, right? काफी लोगों ने इनके absolute के testimonies जो हैं वो forward किए हैं, and I believe she is one of the best testimony in Atomy global market regarding absolute and other products, right? So we are very proud to announce you today in case study on Diamond Masters. हमारे साथ में one of the most dynamic personality है, और she is Eydie Forte from USA, and very humble, very dynamic, very down to earth personality. मैं पर्सनली इनके कनेक्ट में हूँ, एंड जब भी मुझे हेल्प का कोई रिक्वायरमेंट होता है ना, मैं कभी इनसे कोई हेल्प मांगने के लिए झिझकता नहीं हूँ, एंड शी ऑलवेज रिप्लाई मी, शी ऑलवेज पे अटेंशन, एंड अपार्ट फ्रॉम वी आर नॉट फ्रॉम हिज टीम, राइट, वी आर नॉट फ्रॉम हर टीम, बट स्टिल शी इज सो सपोर्टिंग. और ये जो हम्बलनेस है, ये जो कल्चर है, ये सिर्फ एटमी में देखने को मिलता है. दैट्स व्हाई आई एम स्माइलिंग. एंड ये जो चीज है, ये चीज हमें सीनियर्स से बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी. तो मेक श्योर शैरन रोज मास्टर हमारे साथ में, कम ऑन, मतलब वी हैव टू मेक नॉइस, राइट? बहुत ज्यादा नॉइस करने का जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लाने का जरूरत है. चैट पे एक्साइटमेंट दिखाइए, और अपना सभी लोगों के साथ में जो है, जो भी स्माइलीज आप भेज सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, सेंड स्माइलीज, सेंड इमोजीज, एंड ज्यादा से ज्यादा जो है चेयर अप कीजिए इस मूवमेंट को. Why this session is so important, मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. मैं हिंदी में बताऊंगा, इसके बाद में हमारे जो होस्ट है वो इसको टेक ओवर करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट दिस सेशन. सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वी हैव नॉट सीन द कल्चर ऑफ एटमी, वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट कल्चर, व्हाट इज द आई मीन soul of Atomy, right? And many people who are working from last so many years, they have seen the entire culture. उन्होंने जो है उस लाइफ को जिया हुआ है, और जो काम उन्होंने पिछले 7-8 सालों में, 4-5 सालों में देखा है, वो अचानक से एक साल में हम नहीं देख सकते हैं. तो हम लोग वो सारी चीजें समझने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया, व्हाई शी स्टार्टेड विद एटमी, एंड हाउ शी बिकम शैरन रोज मास्टर, एंड हाउ शी इज अर्निंग lakhs of money from Atomy, right? So welcome Eydie ma'am, and I am just unmuting all of you. एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए Eydie ma'am के लिए. Let's welcome her to. Welcome, Eydie ma'am. Welcome. Welcome. So welcome Eydie ma'am. Please, you can unmute yourself. Oops. We're definitely Atomians, and welcome all. I am so excited and ecstatic to be with you. Like he said, you know what? We're not even connected, but this is what Atomy is all about. Supporting each other, encouraging each other. That's why I love Atomy. I love to say I'm an Atomian, I'm a builder, right? And also, you know, I'm a team worker. I'm just nobody. You know, you guys say I'm Sharon Rose Master, but I'm nothing. You know, we're all in it together. Yes, mastership is great, and I will tell you why, right? But then again, we're all individual who's trying to know what Atomy is, right? And the journey is phenomenal. It's a scary moment. It's fun moment. It's discouraging moment. And sometimes she's like, you just want to give up. Forget it. I could go out there and do something better, right? So I don't know if you want me to start, but you know, I just want to say hello and thank you for inviting me. I pray and hope that I could answer any questions or any doubt, because I am, when it comes to Atomy, I'm full board. I'm very transparent and very honest, and I will not hide anything. And I will tell you the truth, because I want all of you to be successful, and I want to see you, all of you, at the top, definitely.
and you have talent, credibility, and everything that you need to make it in Atomy, every one of you. So that's said and done. Let's see. Right. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And we will start this session with our dynamic host. And सभी लोग जानते हैं one of the most powerful personality in Atomy India, right? None other than Mr. Rakesh Kumar, Sales Master. We'll start this session, Sales Master. मैं format बता देता हूँ. The format will be राकेश सर एंड प्रियंका मैम हमारी जो को होस्ट हैं, ये अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पुट ऑन करेंगी इंग्लिश में, और इन सवालों के जवाब जो आएंगे वो सवालों के जवाब दोबारा आप सभी लोगों के साथ में हिंदी में शेयर किए जाएंगे. तो प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि बिकॉज इट्स अ 2 लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम, राइट. इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा, बट पेशेंस रखिएगा, बिकॉज ये जो लर्निंग्स मिलने वाली है ये लर्निंग्स कहीं नहीं मिलेगी, राइट. सो वी विल स्टार्ट विद राकेश सर, एंड ओवर टू यू राकेश सर, एंड प्लीज एडी मैम कैरी ऑन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को केवल छोटा सा, अभी रितेश जी ने काफी कुछ सारी इन्फॉर्मेशन एडी मैम के बारे में दे रखा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, व्हेन वी टॉक अबाउट मास्टरी इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन वर्क, वे ऑफ वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एडी मैम इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट, राइट. क्योंकि इनकी वर्किंग, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद जब करते हैं, और जब इंटरनेशनल लीडर जब इस प्लेटफॉर्म पे हमारे हिंदुस्तान में हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, राइट, इनके पास जो एक रिच एक्सपीरियंस है वो आज आपके सामने हम लोग रखेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में होगा वो परफेक्ट तरीके से मैं आपके सामने इसको आपके सामने रख पाऊं, ताकि आपके पास जो लर्निंग आए वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आए, राइट. सेशन को शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू वेलकम एडी मैम, राइट. और मैं चाहता हूं कि एक बार अगर पॉसिबल हो पाए तो, अच्छा क्लैपिंग तो मेरे ख्याल से हो चुका है, राइट, हमें रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इस सेशन को अगर आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और अगर बेस्ट पोजीशन पे नहीं है तो वीडियो ऑफ रखिएगा, और अगर आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं तो आप लोग अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं, राइट. शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और ये सेशन जो बेसिकली है, इट्स अ केस स्टडी ऑन मास्टर्स. केस स्टडी ऑन मास्टर्स इज बेसिकली व्हाट आप लोगों को समझना होगा, राइट. मैं अभी आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, केस स्टडी ऑन मास्टर्स का जो पर्पस ये है कि आपके सामने जितने भी मास्टर्स हैं, वो चाहे डायमंड मास्टर हो, चाहे शैरन रोज मास्टर हो, राइट, या उसके नेक्स्ट लेवल के लीडर्स को, उनको आपके सामने लाने का केवल एक पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि आपके सामने वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और वो टेक्निक, वो टूल्स, वो स्टडी, वो आपके पास सारी तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि आपको एक एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल पाए कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है. इस बिजनेस में काम कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है दोस्त. इसलिए आज हमारे साथ जो कनेक्टेड है इंटरनेशनल लीडर फ्रॉम यूएस, और आपकी ये जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, या शेयर हम लोग जो बताएंगे, जो डिस्कस करेंगे अभी, ये एक एक चीज आपके एक एक लाइन हो सकता है कि आपके लाइफ में यू टर्न कर सके, राइट. बहुत देर नहीं करते हुए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट मैम, यू आर शैरन रोज मास्टर नाउ. So it's a great honor to have you in this platform. So first question, because ये क्वेश्चन जो है, I mean, अभी जो हम लोग आपके सामने रखेंगे, ठीक है, ये सारे सवाल आप ही लोगों के तरफ से हमारे पास आया था, उसमें से हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, देन उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे पुट अप करेंगे, और रेडी मैम उसका क्लैरिफिकेशन देंगी, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा, करेक्ट. रेडी मैम, आर यू कंफर्टेबल? कैन वी स्टार्ट दिस सेशन? Absolutely. Ma'am, this is the first question from the Indian Atomy India, because there are a lot of people who are working here. So the first question is, you are here in Atomy from several years, correct? Yes. How did you started your journey in Atomy, and what is the main reason to join this company? And how would you explain your journey in Atomy? This is the first question. I hope you understand, ma'am, and please share your views. Thank you so much. All right. Well, at the time when I met Atomy, I was working for Samsung. I was traveling all over the world, Europe and Asia, because I was a negotiator for getting the most exclusive organic product for South Korea. We're opening a huge mall. There was one in Milan, Italy. It's called Ten Corso Como. Okay, so Korea, Samsung got the exclusive
to open one in Seoul, Korea. So now there is 2 in the world. So I was the negotiator going all around getting and negotiating the price, to be successful. And that's what I was doing. And when I was testing one of the product, I broke out like crazy. So I was taking care of myself, going to the doctors, what was going on. And then my mom decided to change a church. So anyway, I got to go visit her. And there was a lady who introduced me to anatomy. I was very arrogant because I thought I knew everything. So I wasn't interested. She said this $100 skincare regimen was the world best. $100, 6 set. I'm looking at her, with a smile, and it's like, okay. In back of my head, I was just ignoring everything she was saying because I've been around about all skincare. Seriously, from, let's say, the drugstore, let's say, to few dollars, to exclusive for custom made to $25,000 skincare regimen, and the red carpet, $1,000 a little vial, and things like that. So I was just totally ignored. One day, I got a package at the house. I called my mom and said, Mom, I got a package. What do I do with this, right? And she said, utterly, Eydie, this is what you do. You test products and you give your opinion. So this is the only thing she's asking for you to do. Try it and give her honest opinion. That's all you have to do. So of course, I'm a good daughter. I said, yes, mother. And I tried the product. I was blown away. Guys, I was truly, truly blown away. And that's how I started. But the business side, I wasn't interested at all because I was, traveling. I was, I was international, let's say, director of marketing. And so I was happy. So, and I didn't know anything about network marketing either. So that part, no. But I got to use the evening set, 4 set first. And then one of the things that they told me was the first set, the essence, you could utterly put the whole bottle on your face because it's a nanotechnology. I know about nanotechnology, right? So one day again, I said, I'm going to put this to the test. So in the evening, after doing the, 4 set, and I utterly put essence on my skin. It was continuously absorbing. And I said, how could this be? I have used so many products out there, and I know it's a nanotechnology, but I could utterly put the whole bottle and my skin is absorbing. So that completely sold me, completely, okay? So I was personally using it for myself, but I was not sharing because I was sharing everything else, right? So business part, and fast forward, let's see, I wasn't interested, like I said, doing the marketing. And of course, life happens, things happen. People think your life's gonna go perfect, right? You plan this, you plan, the vacation, whatever it is, it all falls apart instantly because life happens. Well, that's what happened to me. So I lost investment, I got embezzled because I'm very trustworthy, right? So anyway, so the lady came to me once again, Eydie, I know your heart. You go India and you feed a lot of children. You're a missionary. You need to do anatomy. This is gonna open the doors for you. So I said, okay, maybe this is my calling. So this time, not even a doubt. Little I had left, right? She said, you need to open up a center. I didn't have no members. I didn't have anything. I didn't know the marketing. I didn't know nothing at all, but I plunged in all the way. I said, okay, center, all right? So I opened the center 3 years ago, but yet I was not sure, what is this? But I knew how to share.
I love my skincare system. So that's how it started. But I'm being transparent and being honest, I was not building. Even though I was center leader, you know, it was everywhere I look. It's like, what am I doing here? What am I doing here? I could go out there and I wasn't even getting paid. I wasn't even getting paid. It's like, and when I did finally, it was like $60 at that time. And I'm making $60. Okay. And I could be making like $500 an hour some places, right? And it's like, okay, I was very, very doubtful. But in my heart, I felt like I was in the right place. But mentally, I was struggling, guys. But I had to overcome that. There was, I mean, I'm not going to go all in detail, but the question you guys had was, okay, when did I utterly start? You guys know that I came to India 2 years ago. That's when the pandemic started. I was locked down there 7 months. I could not come home. I was very sick. I don't know what I had, but anyhow, I got to learn so much about India and many different things. But when I came back, I doused myself with the Him because I didn't know you're supposed to take care of your health. I thought it came automatically. I knew all about the beauty, but health-wise, I didn't know. I never took any vitamins. I didn't take nothing. But the Him I took before because it gave me energy. But anything else, it was like, I hate taking pills. So when I came back, I really sought my heart. I said, if you're going to do this, Eydie, you got to do it all the way. All the way. No doubt, just all the way. And that's when I chose to do out of me 100% mentally, with the heart, everything that I had, I'm going to put it all in. And that's when things start moving. That's when things moving. And because I've known, like, Rakesh said, when it comes to skincare, you guys all know how old I am. Absolute skincare is phenomenal because it is de-aging. It is most amazing skincare regimen that any man or woman could use. I'm the proof. Anyhow, I mean, when I was doing North Carolina, and that's not even my group either. I'm always invited. In that seminar, it just came out of my mouth. I said, I'm gonna go Sharon Rose Master this year. That was in October seminar that I did. It just blurred out. And I talked to my team in November, and when the November came, right, we thought it was 1 year celebration. We were gonna have huge promotion. Guess what? The time that I chose, November 1st through November 15th, there was no promotion whatsoever. Nothing at all. You guys went to our celebration. You guys got all 4 sets, right? But on the system, there was none whatsoever. Everybody was discouraged. I was discouraged. But guess what? My team came through. They came through. And I was able to achieve Sharon Rose Master. I mean, that's pretty much how I got to where I am. And I'll, from the next question, I guess I will add on. But yes, you got to go all the way, guys, all the way. Thank you so much. Thank you so much. That's what I'm saying. This is the power of words. What you speak, you are. And the same thing happened with you right now. मैम की अभी जो इन्फॉर्मेशन जो अभी शेयर की है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता हूं. मैम ने ये कहा कि इस बिजनेस में आने से पहले, ठीक है, इस बिजनेस में आने से पहले शी इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट? कॉर्पोरेट इन द सेंस इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वहां पे काम इनका ऑलरेडी चल रहा था और काफी अच्छे प्रोफाइल पे इनकी वर्किंग हो रही थी, राइट?
अच्छी प्रोफाइल पे काम करने का मतलब होता है कि आप एक टीम मैनेजमेंट के लेवल को आप हैंडल कर रहे हो, यू आर गेटिंग गुड मनी, हैंडसम सैलरी, राइट। ये सब सारी चीजें इनके साथ ऑलरेडी हो रही थी, और इस चीज को करते करते, और ये एक मार्केट में क्या होता है ना कि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम करते हो, देन आप एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद एक आदमी के अंदर नोइंगली अननोइंगली एक ईगो आ जाता है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और यही चीज मैडम के साथ भी हुआ, उनको लगा कि यार मैं अब इस पोजीशन पे हूं तो मुझे अब क्या जरूरत है, मुझे किसी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, राइट। जब इनके पास सारी चीजें थी और इनकी ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले से हो रही थी, ये ट्रैवलिंग वैसे भी करती आ रही थी, ठीक है, ट्रैवलिंग इनके जॉब में था। जब इनके पास एटमी एक लेडी, इनके एक नोन ने इनको जब एटमी के बारे में बताया और बोला कि ये एक बिजनेस है, तब तक इनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं मालूम था। आप समझना इस बात को कि एक फ्रेशर माइंड, फ्रेशर दिमाग कहने का मतलब है कि आप कभी भी इस फील्ड में कभी कोई काम नहीं किया आपने, राइट। और उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आता है, फिर आपको लगता है कि अरे यार ये क्या है, मेरी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। इस तरीके के लोग थिंकिंग करते हैं, ये मेरे को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समहाउ धीरे धीरे इनके फैमिली मेंबर्स ने जब इनको ये कहा कि आपको एटलीस्ट एक बार इसको यूज करो, देखो क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो समहाउ एक सर्टेन टाइम निकलने के बाद इनके पास वापस इनके फैमिली मेंबर्स ने ये कहा कि आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो और एक बार इस पे कुछ अपना रिव्यू दो, मतलब क्या लगा प्रोडक्ट, कैसे है, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो ये इन्होंने एसेंस एक प्रोडक्ट है अपना, आप लोग को आपने यूज किया होगा, राइट। एसेंस को जब इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया और वहां से जब इनकी एक प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी, कहने का मतलब कि जब जाने अनजाने में हमारे एटमी का एक प्रोडक्ट, आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक प्रोडक्ट जब इन्होंने यूज किया, वहां से जब इनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, राइट, धीरे धीरे करते करते इनको लगा कि चूंकि अब ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे लेवल पे काम कर रही थे, तो जो भी इनके रीच में जो अच्छे ब्रांड्स थे उनको ये यूज करते आ रही थी स्टार्टिंग से, ठीक है ना। जब इनको एटमी के प्रोडक्ट्स जब यूज करना स्टार्ट किए तो उनको एक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो और एटमी का जो प्रोडक्ट है, दोनों में बहुत कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है। और धीरे धीरे करते करते ये एटमी के सारे प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद इनके चेहरे पे एक अलग, एक कह लो आप ग्लो कह लो, या फिर स्किन की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होती चली गई, वो डेवलप होती चली गई। और डी एजिंग प्रोडक्ट्स है, देखिए एंटी एजिंग की बात तो हम लोग सुनते हैं, डी एजिंग प्रोडक्ट्स का एक्चुअल में अगर फायदा है तो मेरे ख्याल से आप एडी मैम को हुआ है, और ये आप देख भी सकते हो, करेक्ट, आप देख भी सकते हो कि अब उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरा अब यहाँ पे मैम का ये कहना है कि जब उनको सारी चीजें समझ में आई, फिर भी उनको ये कन्विक्शन नहीं था कि इस बिजनेस में करना, क्योंकि बिजनेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन हाँ, इनकी ट्रैवलिंग इनको काफी ज्यादा करना था, और हिंदुस्तान के अंदर इनका एक हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि हिंदुस्तान में आकर के यहाँ पे कुछ काम करना, लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम करना, ये इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज था जो शायद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के नहीं कर पा रही थी। फिर क्या हुआ इनके साथ कि इनको किसी इनके अपलाइन जो बिजनेस में जो उनको लेकर के आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको एक बात कही कि अगर आप इनको हिंदुस्तान इंडिया मार्केट में जाना है और इस तरीके की कुछ काम करने, सोशल सर्विस देना है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और ये आप इस बिजनेस को हिंदुस्तान लेके जा सकते हो। और वो सिलसिला वहां से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे काम करते करते हिंदुस्तान के अंदर इनकी एंट्री होती है। वहां पे इन्होंने अपना पर्सनल सोशल वर्क जो करना है वो भी किया, और बिजनेस को भी धीरे धीरे एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। और इंडिया के अंदर आज के डेट में इनके ही ग्रुप में एजुकेशन सेंटर भी है और एक डायमंड मास्टरशिप क्वालिफिकेशन भी है। हर चीज आज हिंदुस्तान में इस बिजनेस की पावर को मैम समझाने की कोशिश कर रही है। और इन्होंने एक चीज और आपको कहा, पावर ऑफ वर्ड्स को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। पावर ऑफ वर्ड्स को क्या है, एक सेमिनार के अंदर अब इन्होंने एक मीटिंग के दौरान एक बात कह दी कि मुझे इस बिजनेस में अब जो, जब तक वो डायमंड मास्टर बन चुकी थी, करेक्ट, और शैरन रोज मास्टर की शायद उन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया था, और मीटिंग के दौरान किसी से डिस्कशन करते वक्त ये बात कहती हैं कि अब मुझे शैरन रोज मास्टर जाना है, और वो भी कन्विक्शन के साथ ये बात कही जाती है। और वहीं से इनका शैरन रोज मास्टर का सिलसिला स्टार्ट होता है, और वो आज के डेट में शैरन रोज मास्टर हैं। आप सबको एक चीज मैं हमेशा इनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पावर ऑफ वर्ड्स की बात जब हम लोग करते हैं, आपके जबान से जो भी चीज निकलता है ना, वो सच्चाई होती है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं घूम करके आता है, राइट। इसलिए हमेशा कहते हैं, हम लोग मीटिंग में कहते हैं कि जबान से वही चीज बोलो जो लाइफ में चाहिए, वो चीज ना बोले आप लोग जो आपको बिल्कुल लाइफ में नहीं चाहिए, राइट। तो ये जो सेशन अभी जो पहला क्वेश्चन का जो जवाब मैडम ने अपने तरीके से दिया, और आई होप कि मैंने आप तक क्लैरिफिकेशन दे पाया हूँ, क्योंकि डिस्कशन काफी लंबा होता है तो कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं समहाउ। अगर आप लोग ओवरऑल आप इस डिस्कशन को समझना कि किस तरीके से इनकी जर्नी आगे बढ़ती है, राइट। So thank you so much, Eydie ma'am, for this absolutely perfect or amazing answer, right?
आपने बहुत I mean you clarified this all your working, how to start your business and how you dream about this business, what is the way forward for this business, right? So everything is perfectly spoken. So the next question is very interesting. The next question is, what is the importance of auto consumer in one's life anatomy? Okay. Automations. If we talk about automation of business, auto sales master, auto diamond master, what is the importance of auto consumer, and how can you define this auto consumer? Auto consumer is when you start sharing. For me, because I fell in love with the product, I was going to continuously use it. So our company says, when you have a happy consumer, they're going to stay with you for a lifetime. So to become auto sales master, it's so simple. You guys make it so hard, but it is easy. First of all, when you listen to our Chairman Hung Yin Park, if you have consumer who's loving your product, right? Let's say 60 people on the right side and 60 people on the left side. That itself is going to create the auto sales master. Reason why is that there's so many people think so hard. Are you going to stop brushing your teeth? You're going to do that for a lifetime until you die. Are you going to not shampoo your hair? You're going to continually use that. Are you not going to shower? This is daily necessity, daily, okay? You're not going to stop. If people come to you selling insurance or whatever they're selling, we have an option to say, no, I don't need it, or we're in the position, we cannot afford it, or we're not in the position to have that extra because it's luxury, right? But the things that we have in Atomy is daily necessity. No matter what, if anything happens to the world, right? You're still gonna brush your teeth, clean your body, shampoo your hair. Nothing's gonna change. Only the hardest part is you're teaching and educating people why they should use your product. For example, it is natural. Don't you love your family? Don't you love yourself to know that I don't want no more chemicals in my body? Yes, it might cost a little bit more than what I'm used to, but in long term, the benefit that you're gonna receive by using my product and now your product is gonna change your life. You're gonna be healthier, you're not gonna get any sicker, right? So when you find that one family or one household, they love the product, they're gonna use that for a lifetime. So automatically, they're gonna use that continuously. This is what happened to me. And that's what the happy consumer is all about. That's what our CEO is saying. You got to focus on happy customer one by one, okay? Let me tell you, in America, we work 40 years to make 2,000, not even 2,000, 1,000 to get a retirement. 40 years we work. Everybody on this Zoom, what if it took you 1 year? Well, let's say 2 years to find that, let's say 500 consumer who will brush their teeth every day. Is it hard? Come on, guys, everybody that you know brush their teeth. So don't focus on big thing. When they fall in love with one item, they're gonna start trusting you and they're gonna say, oh, what else do you have? What don't you, seriously, another thing is that your head has the largest pore in your body, okay? So everything that you put on your head is gonna go straight to your body. So shampoo, if you're putting all that chemical into your head where the largest pore is, right? You're gonna say, the shampoo you're using, it's got too much chemicals. You need to try mine. We're all business owner in a sense, and you guys need to think like it. So even though with Atomy, there's none, not even 1 rupee to come in, you got all free membership. But yet, I love one of my leaders said, Madam, this is how I thought. If I'm gonna open any business, it's gonna take a little bit of money or a lot of money.
I don't have a lot, but I know I'm going to invest in me and invest in what I want to build. So I'm going to make a samples. Awesome. So you have a shampoo and toothpaste and toothbrush, whatever you have. You say, you know what? Try mine for 3 days. And after 3 days, you take it away. They want to keep it. It always happens. So foremost, auto is the most important thing that you're going to succeed in Atomy. Our Hungry Park, Chairman Hungry Park says, if you don't make auto sales master, it's going to be very hard to succeed in Atomy. And that's the transparency and honesty of our Hungry Park, and for myself with my opinion. So most important thing is that you yourself have to be auto consumer. And then you need to duplicate everybody that you know the same thing. Love your product. In Atomy, if you do not love your product, there's no reason for you to be here or do this business, because there's no way that you're going to come across honestly with your product and the testimony. Does that answer the question? Absolutely. Perfect. I mean, this is one of the best, I mean, the way you can work, right? So thank you so much for sharing your views in this question. So मैं first पहले आप लोग को मैं clarify करूं, मेरा सवाल क्या था? देखिए, कई लोग होंगे जो सवाल शायद नहीं समझे होंगे. मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एडी मैम से कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटो कंज्यूमर. ऑटो कंज्यूमर क्या होता है? ऑटो सेल्स मास्टर सुना था, ऑटो डायमंड मास्टर सुना था. व्हाट इज ऑटो कंज्यूमर, राइट? ऑटो कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि वंस यू स्टार्ट योर यूजिंग योर प्रोडक्ट, कहने का मतलब जब आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एडी मैम, आप अपने प्रोडक्ट से लव कीजिए, मोहब्बत कीजिए, हिंदी में मैं कहता हूं, ठीक है? उसके बगैर आपको रहना नहीं, उसके बगैर आपको सोना नहीं है. सुबह उठने के बाद पहला काम एटमी के प्रोडक्ट, और सोते वक्त भी आप लास्ट काम करो तो एटमी के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है? ये इन्वॉल्वमेंट अगर आप लेकर के चलते हैं, तब जाके एक बड़ा मिरेकल आपके लाइफ के अंदर होता है. क्योंकि ये बिजनेस का जो कनेक्शंस हैं, इस चीज को आप समझना, ये बिजनेस केवल करने से नहीं होगा. इस बिजनेस के साथ आपको फॉल इन लव जो हम लोग कहते हैं ना, वो करना पड़ेगा. हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने कंपनी से प्यार करो, राइट? हम लोग वहां पे लोगों को ये ज्ञान देते हैं, अपने काम से प्यार करो, ठीक है? अपने काम से प्यार करो और आगे बढ़ो लाइफ के अंदर. लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी के साथ जुड़ते हो, तो आपके इमोशंस उनके साथ कनेक्ट होते हैं, राइट? और जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने भाई, अपने फैमिली मेंबर्स और कई ऐसे नए लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, जिसके साथ आप मतलब आपको इस बिजनेस में लाइफ टाइम लेकर के आगे बढ़ता है. एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है कि शायद वैसा रिलेशनशिप आपको किसी फैमिली के अंदर भी नहीं मिले, राइट? तो मैम का यहाँ पे ये कहना है कि आप इस प्रोडक्ट में देखिए, सबसे पहली चार्ज ऑटो कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि लकली, नोइंगली, बाय अननोइंगली, जो भी कहिए, हमारे पास एटमी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है. वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है, राइट, हमने के पास जो भी प्रोडक्ट है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स है. नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, राइट? जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इस चीज को जब डुप्लीकेट करते हैं अपने टीम के अंदर, तब वहां से आपका गेम स्टार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप कोई भी व्यक्ति को, जब आप एक छोटे से प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, कहने का मतलब आपके बिजनेस में कोई किसी से बात चल रही है, आप इसको कंज्यूमर बनाना है, छोटे से प्रोडक्ट यानी कि टूथब्रश से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, टूथपेस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनको वो प्रोडक्ट दे दो. 50 ग्राम का टूथपेस्ट हमारे पास है, 50 ग्राम का, आप उसको एज ए गिफ्ट दे दो, यूज करने दो, 2 दिन 3 दिन के बाद उनका फीडबैक लो, फीडबैक लेने के बाद उनसे बात करना स्टार्ट करो. वो आपको पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं है उससे, उस प्रोडक्ट की, राइट? वो खुद ब खुद आपको आगे बढ़ करके देगा. और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि एक बार भी अगर किसी ने हमारा प्रोडक्ट को यूज कर लिया, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम उसका फैन रहेगा, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी उसको नहीं मिलने वाला है. अगर 10 दिन 15 दिन भी कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे टूथपेस्ट हो, या कॉस्मेटिक ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हो, इसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग है कि आप करके देखना. अगर आपने कोई प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद अगर कोई दूसरा ब्रांड को आप अपने चेहरे पे यूज करते हो, या टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथब्रश यूज करते हो, इमीडिएट आपका बॉडी रिएक्ट करेगा वहां पे, बोला यार ये तो बहुत ही बेकार सा क्वालिटी है, राइट? तो ये चीज है, ऑटो कंज्यूमर अपने आप बनते चले जाएंगे, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है. कई सारे कंज्यूमर ऐसे, कंपनीज ऐसे हैं जहां पे ऑटो कंज्यूमर बनाना पड़ता है, मतलब उनको बार बार आप जाकर बोलो ये लीजिए, वो लीजिए, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई करके देखो, अच्छा इससे फायदा नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं, ये ट्राई करके देखो. ये सब चीजें होती हैं, फिर भी वो कंपनी सर्वाइव करती है, वो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर भी सर्वाइव करते हैं. लेकिन हमारा काम कितना आसान है, हमने एक बार किसी को टेस्ट करा दिया, वो आदमी पीछे पीछे आपके आएगा और आज आपका कस्टमर बनेगा, कल को वही बिजनेस में काम करने
करना स्टार्ट करेगा और कल को वही बड़े लेवल पे लेके जाएगा। एडी मैम के साथ भी सेम चीज हुआ था। स्टार्टिंग में इन्होंने केवल प्रोडक्ट को यूज किया था। एज ए कंज्यूमर शी इज entered in this business एज ए कंज्यूमर, और प्रोडक्ट में जब इनके फेथ आया, बिलीफ आया, तब जाकर के धीरे धीरे बिजनेस को समझना स्टार्ट किया। देन आज उस बिजनेस के अंदर शरण मास्टर की लेवल पे है। ठीक है, तो ऑटो कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस की जब बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में बहुत है, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये तब होगा जब आप 100% कंज्यूमर होंगे, जब आप अपने टीम के अंदर 100% डुप्लीकेट करोगे, तब जाकर के ऑटो कंज्यूमर का एक बेस क्रिएट होगा और वो आने वाले टाइम में सबसे बड़ा काम करके देगा। ठीक है ना, ये और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अभी इसके ऊपर और भी सवाल हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर व्यूज। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज what major mistakes some Atomians are repeating? I mean, what I'm trying to say, there are a lot of people, a lot of distributors who are working in Atomy company, and few people are very vast experience in direct selling industry, correct? Lot of experience they have about network marketing, but unfortunately few people work in Atomy India are doing same mistake again and again, right? So aapke according to you, what is the major mistake some Atomians are repeating? Are you asking me as a consumer or as a builder, right? Because we're as all here. As a business builder, yeah, right. Okay. First of all, with my experience with my team and other teams and India in general, this is not quick make money company. Okay, let's get that really upfront. All right, this is where it's a garden that you're attending to, and you're gonna water, and it's gonna grow. All right. The mistake I see is that this is our own business. Everyone on here, as a builder of Atomy, you are your own CEO. You all have $1.2 billion company that was given to you absolutely free. What you do with it is your responsibility. Okay, but as a team and as an organization, when you do have both binary legs, right, left and right, your focus is you and your downline. Okay, me, I'm building both legs. That's what I know. That's what, I know there's so many people, oh, if you build one side, I will build other one for you. Absolutely not. Because yes, one of you, or maybe all of you, has one power leg. The reason is your sponsor is the builder with you. So one side will be more powerful always. But do you know those people personally? I know you don't, because your sponsor has, put them under you, or someone else did. So you don't know that person. But if you are the builder, right, you gotta have the leader on both sides, left and right. The people that you could talk to, you could, as a leader, partner that's gonna take you all the way to top. With the Atomy marketing plan, you need 4, which is 2 on your right and 2 on your left. But what if it doesn't work out? So you always have to kind of have that safeguard, right? So you want to create maybe 4 or 6 or 8 leaders on both sides. But that is your team, not someone else's. Okay. Yes, when you have a powerful leg with PV, you will get, of course, more PV. But when you are trying to get a mastership, it doesn't really help. Because once you become diamond master, right, the PVs doesn't make any difference. You need leaders, right? PVs, yeah, it's great, but you need to have 2 sales master and 2 sales master on both sides. So it don't got nothing to do with volume. Sales master, absolutely. You could do sales master all by yourself. Why do you think they call it sales master? You are becoming a great of promoting your product, and you could do that yourself, going there, selling, retailing, right? So 2.5 million, 2.5 on the side, and using your personal PV is easy. I'm not saying easy, but it's doable by yourself. But once you step up to Diamond Master, the whole game changes. It's not about volume. It's about duplicating yourself, and you're helping your downline, your partner, to become sales master just like you did. Okay, so mistake is that
How come you're not doing this for me? How come you're not doing that for me? Up there, how come you're not doing this for me? How come you're not doing this for me? It's your business. You're responsible. That's what our CEO says all the time. This is your business, okay? So please focus on your business and your downline and how you could help them. I'm gonna be honest with you, when I plunge myself into Atomy, I'm at the center at 6:30 in the morning, and I usually don't go home until 1 or 2 o'clock in the morning. And my partner is all American. He goes, Eydie, what are you doing there at 2 in the morning? You need to go home. They don't have a clue why I'm here. But you know what? I'm gonna tell you why. The time that I spend in my center. Let's say my partner is Diamond Master or Sales Master. When the extra PV comes, right? Where am I gonna put it? Who am I gonna help? Okay, let's say I'm gonna help Rakash. Okay, he needs certain, I go to his lineage, right? And oh my God, his left is kind of short of, let's say 50,000 PV. Okay, I'm gonna put it on his right side so it'll really get him a commission, right? Then, and I go one step further. Okay, he needs PV on his right, 50,000 PV, right? So who's a builder on his lineage? So I'm looking for another builder with a 2 binary, right? And I would ask Rakash, give me their ID. I would always ask for somebody who's a builder, their password and ID. If your sponsor asks for your ID, you better be glad they're asking, asking because they want to help you. That's the only way, only reason your sponsor wants to know your ID and password. Nobody else will have it. You never give it to your downline. But if your sponsor, be free to give them, because only thing they wanted is to help you. So I go to Rakash's back office, and then I go to his lineage, and let me see. I'm gonna put 50,000, but I know it's gonna be in Rakash's right side. But who's the builder on his right? And I look at their lineage too, and I go into their account and say, I wonder how much they need to make something, right? So let's say if I'm gonna put like 70,000 PV, but Rakash only needs 50, but their downline, if I could focus on his right side, the builder, and if I could help them, give them 70,000 PV, guess what? They get commission, Rakash gets commission, I get commission, whoever gets up there gets commission, right? But sometimes I even go 3rd or 4th level. So with that extra PV, that so many people or members or partner could benefit. You think that's instant? No, because you got to take time to go to their lineage and their lineage and their lineage, so you can maximize that PV for everyone. That's what leaders should do. Okay, that's me. But what I'm saying is that's why I'm here. Finally, after a couple of years, now they understand why I was here, because I'm duplicating myself, and they ask me, what do I do? I would teach them what I know. So now they understand, oh, I know why Eydie's here that late, or why she's asking for, password and ID of my downline. So guys, mistake. It's always, what can I do for you? It should be your heart. Our motto, serving with humility, right? That's very, very important. I don't know what you guys' backgrounds are. I really don't know. You could be, CEO with a different company. I have my own business. I was, international director. I have a lot of credentials, but that doesn't mean nothing in Atomy. We don't need no credentials. Anybody 18-year-old to 80-year-old could build this if they have passion and humbleness and ready to serve. It's not what they could do for you. It is what you could do for them. When you have that mentality, you watch, your garden's gonna grow, your your downline's gonna work, right? Because we're always wanting things. But if you have a mentality of, what can I do for my downline? It's gonna grow, and they will know what you do later. Because right now they don't know
Why, how come you're not help? Whatever it is, they don't know. But one thing for sure, it all starts with you. Okay. Don't ask for anything. You work hard because this is your business. When you have that mentality, it is yours. If you fail, it's your fault. If you make it, you give you all the credibility to yourself. Right. Thank you so much, ma'am. Thank you. So this is a perfect, I'm repeating this word again and again because I can understand the way you speak, the way the conviction you have about this business opportunity. If we talk about network marketing, you have the clarity, ma'am. I really appreciate your point of views. I really appreciate your way of delivery. I mean, you are amazing, totally amazing, right? And Ma'am, one more thing. This is very crucial. The builders, okay? Mm-hmm. Don't go wide. Every time I see my leaders or downline, they are going, because you get some of you, most all of you done MLM before. Adam is totally different. You guys got to get that through your head. It's different. It's multi-level marketing, but we're binary. We don't go wide. We go straight down. So everybody that you recruit or sign and enroll, they go straight down, left or right. You do not help your partner. You do not help your family. You do not help your sister or brother. No, you got to think of you first. That's the mistake that I made in the beginning, and everybody makes mistakes. They think, okay, this person comes in with, they need to bring 2 people. It goes on 2, and it's just going wide. Who are you going to help? This is what you do. Everyone that you bring in, they go straight down, no matter what. And it doesn't matter if they have let's say, Rakesh, you sign someone up today, okay? And then you're going to sign few more people underneath them. He decided, okay, I want to do this business. Okay. So he's bringing someone. He already has someone on his left because of you, right? What would you do? Where would you put that first person that he brings in? Oh, he doesn't have anybody on the right. So you probably think, okay, let's put him in the right. No, because he hasn't brought 2 people yet. When they bring someone, first person goes always to the left, right? But there's already someone in the left. But that person has to go below your last person. And then the second person he brings, he's got to go on his right. So boom, he's got 2 people that he knows on the left already. Right? And next person he brings is on the right. Now, next person that he brings, right? Now, he's dynamic, he's great, he's wonderful, right? So he goes, oh, I want to put him on my right leg because, I don't have anybody. Now, you guys have to think, you looking at this person, all right? Rakesh, you brought someone in. Okay, he's great, dynamic, right? Instead of thinking about yourself, everybody, you got to think about that person. Where does he belong? Is he really a builder? Is he passionate? Do you want him to succeed? If he was me, I will put him on my left. You know why? Even though I don't have anybody on my right, I will put him on my left. The reason is I'm looking for his benefit, because on the power leg, he's going to get the help that he needs and he's going to get encouraged. If you put him on the right, this dynamic builder on the right where there's no help and you're not even building yourself, he's going to just forget it and just go away. But if that leader comes and you put him on your left and he's getting help from your power leg and above and everything, he's going to get motivated. He's going to build her, right? And that one builders could blow up your left line and you already have a teammate. Now you can focus on your right. But if you put the dynamic leader where there's a weaker leg, they're going to fall. Seriously, once your one side is stable and strong, you build other side. Of course, you're going to need leaders, right? But you're building both. And that's what you guys are forgetting to do. You're not really looking into that person and what he's capable of. Don't put anybody, that kind of person, on the weaker leg that you cannot support because he's strong. Strong person needs extra support so he could run by himself. When he sees it, he's going to grab it just like me and run.
We don't need anybody, right? We got the system and we're self-sufficient. Does that make sense? Absolutely. Okay. Right. I mean, this is the gyan actually. I'm telling you, this is the knowledge. Dear friends, जितने भी लोग यहाँ पे connected हैं, मैं आपको बताऊं जो अभी मैडम ने जो बातें कही हैं, what she is saying about structure, this is the most important thing. And 99.99% doing this mistake in this academy. I'm telling you guys, right? मैम ने अभी जो बातें कही हैं, उसको मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ. स्ट्रक्चर के ऊपर जो बात कही जा रही है, स्ट्रक्चर के ऊपर अभी तक बहुत ज्यादा वर्किंग या कह लो हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है, राइट? लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस बाइनरी सिस्टम के अंदर हम लोगों को स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिनेज, राइट? हमें नए लोगों को किस तरह प्लेस करना है, स्ट्रॉन्ग लोग जो आते हैं बिजनेस के अंदर उसको कैसे प्लेस करना है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड में राइट साइड क्या होता है, नए लोगों को एक के नीचे एक क्यों लगाते हैं, ये सारी जो कैलकुलेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है. और उसमें मैडम ने जो भी बातें कही हैं वो एक तरीके से मेरे को भी अब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि जिस लेवल पे, देखिए मैम का एक चीज आपको कहना, आपको समझना, यहाँ पे पहली चीज जो यहाँ पे एटमी के अंदर लोग जो गलती करते हैं, नॉर्मली सवाल यही था, सवाल हमने आपसे ये कहा था यहाँ पे, ये व्हाट मेजर मिस्टेक सम एटमियंस आर रिपीटिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा. और यहाँ पे मैम के अकॉर्डिंग जो बातें कही गई हैं कि इसमें 2-3 चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि एक तो पहला आप ये लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि क्विक मेकिंग मशीन है ये, ठीक है, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए, आते के साथ 2, 4, 5, 10 लोगों को टीम बनाया, टीम बनाने के बाद आपको लगेगा कि भाई मैं यहाँ पे कुछ मिरेकल कर दूं और सेल्स मास्टर बन जाऊं, डायमंड मास्टर बन जाऊं. इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. इस बिजनेस में आपको सर्टेन टाइम देना ही पड़ेगा और सर्टेन टाइम. और यहाँ पे लोग सिस्टम से बाहर क्यों होते हैं, आप चीज समझना कि इमीडिएटली उनको रिस्पांस नहीं मिल पाता है, इमीडिएटली रिस्पांस नहीं. जॉब के अंदर क्या होता है, आपने 1 महीना काम किया, जो आपकी एक फिक्स इनकम है वो आपके घर पे आ जाती है. इस बिजनेस में आप शायद ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट्स नहीं मिलते हैं. पे आउट्स नहीं मिलते हैं तो आप कंपैरिजन मोड में इनडायरेक्टली आ जाते हो कि अरे वहां पे तो ठीक चल रहा था या इतना काम करके वहां करते तो कम से कम लाख रुपया तो कमाते, ठीक है, यहाँ पे तो इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं हो पा रहा है, करेक्ट. तो यहाँ पे लोगों का जो एक माइंडसेट है वो मैम वहां पे क्लैरिफिकेशन देना चाह रही है कि क्विक आप सोच के आओगे कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिजनेस ओनरशिप के बारे में, राइट? बिजनेस ओनरशिप के बारे में व्हाट शी इज सेइंग अबाउट बिजनेस ओनरशिप. जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप लेना पड़ेगा. आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप इन द सेंस कि आप इस बिजनेस में आप ऐसा फील करो कि आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटमी इंडिया, राइट? आप एटमी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल. आई मीन ग्लोबल किसी भी कंट्री में जब आप जाते हो या हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में जब बिजनेस करने जाते हो तो आपका एक पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कहना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि आप इस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो. यू आर द ओनर ऑफ 1.5 या 2.2 बिलियन डॉलर कंपनी, राइट? आपको इस लेवल पे आपकी जो माइंडसेट होना चाहिए वो उस लेवल पे होना चाहिए, तभी जाकर उस कन्विक्शन लेवल पे आप लोगों से बात कर पाओगे, काम कर पाओगे. अदरवाइज यहाँ पे अगर आप ढीले ढाले तरीके से आएंगे कि देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, 1 कदम चलते हैं, 2 कदम चलते हैं, देखते हैं दिखता है कि नहीं, होता है कि नहीं, इस बिजनेस में ऐसे काम नहीं पड़ेगा. इस बिजनेस में बहुत गजब लेवल का कन्विक्शन और डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट? बात अब आती है स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं. कभी भी एज ए अपलाइन, जब, अच्छा एक मैं डाउनलाइन के बारे में भी बता दूं, जो ग्रुप के अंदर डाउनलाइन होते हैं, हर एक अपलाइन डाउनलाइन है, हर एक डाउनलाइन भी अपलाइन है किसी ना किसी का, करेक्ट? ये बात आप लोग समझ लीजिएगा. यहाँ पे क्या होता है, कई बार डाउनलाइन की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत जबरदस्त होती है अपने अपलाइन से. इतनी जबरदस्त होती है कि वो चाहते हैं कि हर चीज वो करके मुझे दे दे. पावर लेग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम ने रेज किया है. पावर लेग जो होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका एक साइड स्ट्रांग होता ही होता है और वो फ्लक्चुएट भी करता है. आज ये स्ट्रांग है, कल को ये स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? ये फ्लक्चुएट करेगा लेकिन आपका एक लेग हमेशा कहीं ना कहीं पावर में रहेगा, करेक्ट? वहां पे जब आप किसी नए इंडिविजुअल को जब आप प्लेस करते हो तो प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एक एग्जांपल मैम ने दिया और ये गलतियां हर लोग करते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स को भी आप बिजनेस में ले आते हो, राइट? आपने फादर का आईडी लगा दिया, अपनी मदर के नाम से आईडी लगा दी, अपने सिस्टर के नाम से आईडी लगा दी, ठीक है, आपने अपने ब्रदर के नाम की एक आईडी लगा दी और आप उसी के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करते हो, विच इज अ टोटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना? आपको 5, 6, 10 लोगों को, अपने फैमिली मेंबर को आप संभालने लगते हैं और कभी इधर सपोर्ट कर रहे हैं, कभी उधर सपोर्ट कर रहे हैं. इससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाता है और मेजॉरिटी लोग मिस्टेक करते हैं. ये गलती तो मैंने भी की है समहाउ शुरुआती में, ठीक है, हुआ कुछ भी नहीं, शुरुआत में गलती मेरे से भी हुई है.
ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बढ़ाइए, लेकिन फैमिली मेंबर को कोई भी किसी व्यक्ति को बिजनेस करके नहीं देगा, कोई भी किसी व्यक्ति को बना के नहीं दे सकता। इक्का दुक्का केसेस निकलते हैं, लेकिन आप हर लोगों को सोचोगे परिवार में 10 लोगों की आईडी लगाएं, 10 लोगों को मैं डायमंड मास्टर बना दूं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर के ऊपर वर्कआउट करना है, अपने लिनेज के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। आप कैसे अपने आईडी को प्लेस करते हो, किसके नीचे प्लेस करते हो। हर आदमी का एक वीकर लेग होता है, एक स्ट्रॉन्गर लेग होता है, राइट। वहां पे आप जब कोई इंडिविजुअल आता है तो उसको किस तरीके से आप प्लेस कर रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आपके टीम में ज्वाइन किया तो आप उसको वीकर के साइड में डाल रहे हो या अपने पावर लेग में डाल रहे हो। ये मैडम ने क्लैरिफिकेशन दिया है, इसके ऊपर हम लोग और भी चर्चा करेंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। मैं अब इसको यहाँ पे शॉर्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैडम ने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं वो मेरे ख्याल से क्लियर है। यस रितेश जी प्लीज। बस एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज मेक श्योर हम लोग टाइम का ध्यान रखें, राइट, बिकॉज वी हैव वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चंस एंड टाइम इज वेरी लिमिटेड, राइट। तो मेक श्योर कि हम एटलीस्ट 40-45 मिनट्स के अंदर में इस सेशन को समाप्त कर दें। तो थोड़ा सा हम लोग प्रिसाइज वे में करते हैं और ट्राई करते हैं इसको कि कट टू कट टाइम कंप्लीट करने की। थैंक यू सो मच। राइट, नेक्स्ट अभी एडी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज how do you fix the responsibility in your structure and what is the process to get good effective leadership in Atomy? Okay, the leadership is responsibility, I think. Okay, yes, that's when yes, it yes, comes correct. to 8 steps to success. Okay, when you have that down, you make sure everybody watches that. When you make that determination and you're ready to work with this, you follow through all that, right? And when you read and go through 8 steps to success, it's gonna embed it in you. If you watch one time, it's not good enough. You watch 10 times, 20 times, it should be a daily thing. What am I doing wrong? And always engaging with your sponsor, communication. Don't think you know it all, right? We're all learning together. What fails, what doesn't work. But always, always be professional, okay? Negativity goes down, right? No, goes up, not down. For example, right? If your frustration, you only talk to your sponsor and find the solution. And responsible, when you're doing an Atomy, present yourself. They gotta see some changes in you. For example, are you using the product, or are you, even your appearance? Everybody said, Eydie, why don't you do the Zoom at home? It's okay. You're early in the morning. No, because mentality-wise, I can't think business at my home, just relaxing. I cannot do that. That's how I'm made. So even though I get up early in the morning, when I'm here at my center, I could focus, utterly focus onto me. So it's the habit that you create, and it is the, let's say, the focus that you have that's going to change your leadership, your responsibility, and what, empowering decision every day you can make to change yourself and for your team as a leader. Right, excellent. देखिए मैम, अब यहाँ पे जो मेरा सवाल था मैम से वो ये था कि what is the how do you fix the responsibility in your structure and what is the process to get good effective leadership in Atomy? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने टीम के अंदर एक गुड लीडरशिप को कैसे लेकर के आते हैं और कैसे आप उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपके टीम में लीडरशिप जो है वो कैसी है, वो कैसे आप मैनेज करोगे, लीडरशिप कैसे बनता है, क्या लीडर्स बनाते हैं या लीडरशिप को ढूंढा जाता है, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, राइट। मैम का जो यहाँ पे कहना है कि जो 8 कोर स्टेप की जब हम लोग बात करते हैं, 8 कोर स्टेप के अंदर जो व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद 8 कोर स्टेप को फॉलो करता है, 8 कोर स्टेप आप सभी को पता है, 864, ये जो एक ऑलरेडी सिस्टम बनाया सिस्टम है एटमी की तरफ से, आप लोग को मालूम है उसके बारे में। 8 बेसिक्स के बारे में आपको मैं बता दूं, जो 8 स्टेप हैं उनको अगर आप एग्रेसिवली फॉलो करते हो, दैट मींस यू आर इन द सिस्टम और आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और वही सेम चीज जब आने वाले टाइम में आपके टीम में डुप्लीकेशन मोड पे चला जाता है, लोग जब उस चीज को 100% डुप्लीकेट करते हैं, तब आपको वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना स्टार्ट हो जाता है और सेंस ऑफ जो कह लो कि लीडरशिप भी आपके टीम में दिखनी चालू हो जाती है। मेजॉरिटी अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि आधे लोग जो होते हैं वो 8 स्टेप तो छोड़ो, 8 स्टेप के बारे में उनसे पूछेगा तो शायद उनको वो भी नहीं मालूम होता है, राइट। तो वहां फॉलो करने की बात नहीं आती। तो यानी कि आप हमारे सिस्टम को समझिए, सिस्टम को समझने के बाद 100% पहले खुद कीजिए, देन कोशिश हमें ये करना है कि 100% डुप्लीकेशन आपके टीम में
हो, राइट। अगर आप इस तरीके से वर्किंग करते हैं, पूरे सिस्टम को अगर आप लेके चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा और आपको ये मालूम चलेगा कि किस आपके टीम में लीडरशिप जो हो रही किस लेवल पे आगे बढ़ रही है और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, and next question is, what are the process and strategies we can follow to get new consumer, and how you nourish and transform them as a leader? Okay, first of all, the prospecting. Prospecting is everywhere you go. I know you guys go out somewhere, drink coffee or eat together or visit family. That's all opportunity. One thing is for sure is that wherever you go, you got to take your own products. This is what I do. Product, for example, I know you guys don't have much, but you have a pomegranate beauty, you got probiotic, you got coffee, you got peeling gel, you know, things that you could instantly, you know, give someone to, what do you call it, test, right? So that is everywhere you go. If you're in the restaurant, give them a sample. Don't just give it. This is the mistake that everybody makes, is that you just give it to them and use it and let me know. No. You open the thing up and make sure they take it right then and there. And if you're the leaders who have center, right, you invite them. And this is the challenge I always say. I think I shared that with you. You said, I'm going to give a challenge. If you like our toothbrush and our toothpaste after this demo, you're going to buy one and go home and, you know, take care of your family, right? Or if not, I'm going to give you a toothbrush because nobody else could use it. So now what you do is you open it up, right? Put your toothpaste on and you have them go to the bathroom somewhere, brush their teeth instantly. When they come back, they're going to know the difference. Majority of people in America, right? When you give it to them, they're going to think, oh, it's another toothpaste, another toothbrush, no big deal. It is a big deal because it's absolutely different than anything they have used. Okay, so I'm convicted. They want to use that electric brush, right? I said, no, you throw it away. You don't even give it to anybody because it's going to harm their teeth. And I go on. The reason our toothpaste is, toothbrush is good is because it's not serrated, it's rounded, it's long, but it's, soft, but it's firm. It's gonna, go all the crevices of your teeth, right? And our toothpaste, oh my goodness, made out of propolis. It's gonna be dual ointment. You could use as a functional toothpaste. It could be ointment for your bites and cuts and scars and skin tech, athlete's feet, whatever, the baby's teething. So you go brush. When they come back, they're going to say, oh my goodness, it is different. That's how you get people. You don't just talk about it. They got to experience that moment. Anything that you have sampled, if you have a coffee, you open it up and make a coffee for them and let them taste. They're going to know the difference. How much is this? If you go to coffee, different coffee shop, it's going to cost extra 200 rupees or whatever. Ours, you share the price and they're going to go, oh, wow. That's how you capitalize and get new partners and fall in love with your products. Boom. Right. Excellent, ma'am. Excellent. This is a practical experience that you are sharing with us. मैम पहले तो आप सवाल समझ लो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे कनेक्टेड, मैं फटाफट सवाल रिपीट करता हूँ. मैंने इनके क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी वी कैन फॉलो टू गेट द न्यू कंज्यूमर. नया कंज्यूमर बनाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, और जब एक कंज्यूमर बन जाता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करें एज अ लीडर काम करने के लिए, राइट? यहाँ पे मैम एक चीज कहना, जो गलती एक्चुअली में ये मैं भी करता आया हूँ और कई लोगों से शायद हुई भी होगी. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास जब प्रोडक्ट होता है, जब अपने किसी फैमिली मेंबर्स या किसी फ्रेंड्स को देने जाते हैं, राइट, वो हम लोग देख के निकल जाते हैं कि आप इसको प्लीज एक बार ट्राई करना, आपको बहुत मजा आएगा. हम ये देखते नहीं कि घर जाकर ट्राई किया या नहीं किया. और नॉर्मली 95% केसेस में ये होता है कि हमने किसी कुछ दिया, वो अपने घर पे जाकर किसी कोने में जाकर रख देते हैं. ठीक है ना? आप 5 दिन बाद 7 दिन बाद पूछोगे, अगर आपने टेस्ट किया, अच्छा नहीं, ओहो, अब वो उनको याद नहीं आता है. फिर वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाते हैं, नहीं अभी तक तो ट्राई किया नहीं. मैम ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है, अगर आप किसी को राइट कोई प्रोडक्ट देते हैं तो इमीडिएटली ओपन करके उनको एक्सपीरियंस करवाइए, भले वो कॉफी हो या हमारे पास जैसे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स हो या आपके पास कोई दूसरे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इमीडिएटली उसको यूज करके दिखाइए, राइट, और वहीं पे उनसे रिव्यूज लीजिए. तब आपको समझ में आएगा, तब जाके वो प्रोस्पेक्टिंग जो बातें हम लोग कह रहे हैं ना, वो आपको एग्जैक्टली उस तरीके से कर पाओगे और वहां से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा. तो एक चीज हमें आज ये 5वें क्वेश्चन से सीख लेना चाहिए, कभी भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट आप देने जाते हो तो केवल टूथब्रश भी देने के लिए गए तो आप दे करके निकलो मत.
ठीक है ना। उनके पास जाकर के उनको बोलो आप इस यूज करके देखो एक बार, उन्हें आपके सामने बैठ के यूज करवाइए, ठीक है। कॉफी देते हैं तो कॉफी बना करके कोशिश करो कि उनके घर पे भी गए हो और आपके पास चाशे पड़ा हुआ है तो उनके घर पे गर्म पानी मंगाओ, बना करके पियो और पिलाओ। ये स्ट्रेटजी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां से रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। समहाउ मैं भी इस चीज को मिसिंग था, मेरे घर पे कोई आता है तब मैं 100% डेमो करके दिखा देता हूं, बट कभी किसी को कोई रास्ते में मिल गया तो उसको भी नॉर्मल दे के निकल जाता हूं, राइट। ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। यस अरुण मीना जी, करेक्ट, राइट। सो थैंक यू Another सो thing is, मच, थैंक यू सो मच एडी मैम, और बहुत मजा आया बात करके, करते करते ये समय कैसे 1 घंटा निकल चुका है, 1 hour ऑलरेडी आई मीन अभी निकल गए हैं। तो मैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड डिटेल अबाउट द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आई एम इनवाइटिंग मिस प्रियंका देशमुख फ्रॉम पुणे। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट और डायनेमिक लीडर इन एटमी इंडिया एंड शी इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क इन एटमी, राइट। सो फॉर फर्दर डिटेल आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रियंका देशमुख। Yeah. Hello, everyone. This is Priyanka Deshmukh from Pune. Hello, Eydie ma'am. This is our first interaction. And I've seen many videos of yours on YouTube, and you're absolutely charismatic leader, absolutely dynamic leader. And the way you speak, the way you explain the things, the way you do tell the practical experience is absolutely amazing. I do follow you on YouTube and I've seen many videos of yours. So as time is less, I'll start directly with the questions. So my first question is, what is the importance of semi-sales master and how it is useful and how it is going to earn income for distributors? well, semi sales master is going to be phenomenal for people who's been struggling to become sales master, because that 25 lakh is kind of huge for some people. Well, how the semi is going to help? Well, just lessening that 1 lakh, PV is going to make some changes. It's going to be something that, oh my God, I could achieve that. When you think about it, even becoming a sales master, when you have 8 people, when you think about it, only 8 people on both sides doing 3 lakhs is boom, it's done, right? And then what 8 is too much? 16, right? At 150, you're sales master, or 75, or let's see, 35, it goes down. But with a semi-sales master is something that it doesn't look impossible. And top of that, you also get extra bonus. So that's going to encourage them a lot. And as a leader, anybody who's building underneath you, right? Of course, the most important thing is that I think is that everybody's forgetting is that you got to be a product user yourself, right? That's the most important thing. That's something that you need to tell your people. Because I know a lot of people who do business, they don't use their own product. That is no. When that happens, things going to move. Because people's going to know, they're going to ask you, are you using the product? What is the result? How are you going to answer? You can't lie about our product. You got to really be genuinely come out truthfully in your eyes and your voice, your actions and your, emotions, everything. It comes out automatically. So when they do that and have them focus on a couple of products, everybody in this world, like I said, toothbrush and toothpaste, coffee, shampoo they use. If they focus on at least 5 products, right, that you guys already have, and and focus on household, like 30 people, 50 people, semi-sales master is going to be easy. And for the leaders who's wanting the mastership, if you have 2 semi-master, right, boom, there's sales master right there. That's going to have a mastership flying out everywhere. But like I said, as a sponsor and as a leader, you need to guide them properly. But foremost, how? And when they bring in, those people to rejoin or sign or whatever you do, make sure you teach them they need to go straight down. And, before I end, I'm going to do a diagram so everybody could visually see how it's going to make the whole different marketing for you to make it very simple and easy and effective for everyone to get the benefit of PV. PV is what we need to succeed, right? To get commission, to bonus and lead. So I hope that answers the question, and it's going to be phenomenal.
उन्होंने ये बताया है, मेरा पहले क्वेश्चन था कि सेमी सेल्स मास्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस है और ये डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे इनकम दिलाएगा। ओके, ये मेरा क्वेश्चन था जो मैंने मैडम से पूछा। तो उनका ये जवाब रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीन्स अगर आप सेल्स मास्टर अगर होना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पीवीज लगते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर वही टारगेट अगर हम कम कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो वो जो एक ये रहता है टारगेट रहता है सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर, ये आसान कर दिया है एटॉमी कंपनी में हमारे लिए। और दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में सिर्फ 8 अगर लोग आप करते हो, उनको प्रॉपरली गाइड करते हो और सिर्फ 5 प्रोडक्ट के बारे में आप बताओ कि आपको कैसे भी करके 5 प्रोडक्ट सिर्फ अपने डेली रूटीन में यूज करने हैं और ये डुप्लीकेट होना चाहिए। नीचे स्ट्रेट अवे आपके पूरे टीम में डुप्लीकेट होना चाहिए कि सिर्फ 5 प्रोडक्ट हर एक मेंबर को बाय करना है, यूज करना है, उसके रिजल्ट्स बताने हैं। तो ये अचीव करना बहुत इम्पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इसलिए इन्होंने एटॉमी कंपनी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सेमी सेल्स मास्टर तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपने लास्ट मंथ अगर देखा होगा तो बहुत सारे ऑफर्स थे जो कि एटॉमी में थे और वहां पे बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो वहां पे आप लाइक रिटेल भी कर सकते हो ये प्रोडक्ट्स और आप पूरे मिनट्स कमा सकते हो। सेकेंड, आपको अपनी टीम को गाइड करना है अच्छी तरीके से कि जो भी अभी सेमी सेल्स मास्टर के बहुत सारे सेशन हुए, लाइक रितेश रंगारे सर ने लिए या राकेश कुमार सर ने लिए, तो ये सेशन सुन के आप अपनी टीम को बताओ कि कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो ये डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। तो मैडम प्रिसाइजली यही बता रही है कि उन्होंने ये ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो एटॉमी के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। तो आप पहले खुद यूज करो, उसका रिजल्ट आपको आएगा। और हर एक लोगों को, टीम के मेंबर्स को एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए बोलो, तभी ये डुप्लीकेट होगा और आप आसानी से ये इससे सेमी सेल्स मास्टर तक पहुंच सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा है। So my next question, ma'am, it is like, what do you think about woman entrepreneurship, and what is the role of why Indian housewife should do Atomy and how it is going to benefit them? Well, that's something that I really wanted to share with Indian country itself, because I know by culture, women are supposed to be a housewife and pretty much they don't, support women having career. And I see a lot, even though with Atomy, they cannot go out in the field and really share. Atomy is all about, Zoom is great, because we're learning, we're coming together and talking, but how Atomy is going to succeed is being in the field, talking to people, showing the product, showing the plan, that inner, the relationship. But if you're not able to do that, yeah, you're going to make some impact, but it's going to take time and it's going to be slow. So men who has a wife or, women, I empower you to go out there. I have sales master. Her husband is the one who introduced to Atomy and say, you need to look into it, right? Now she's a star master. When she became a diamond master, he stopped working. He said, when you become diamond master, I'm going to retire and I'm just going to travel. And that's exactly what he did. He does not work. He just enjoy life because he knows his wife loves doing what she's doing. So he's letting and supporting. What is wrong with your wife making money, supporting you or supporting together? Support. This is nothing but sharing a goodness of humanity in a sense. We're advertising good things for the people that you care about, that you love, and you want to see them healthy and wealthy and giving the opportunity of a hope and dreams that they might lost. Because being in India for almost 11 years, going back and forth, I have seen so much. So this is my heart. My home is Pune. As soon as I come, I'm going to start building there. So I'm really excited. Anyhow, women should really do even this at home, because I say, and this is the thing that in America is a little different than
India, right? There's a lot of divorce rate here, and because they let go themselves, because they become a wife, so they don't exist no more. They become mother, so they don't exist no more. And they're a daughter-in-law, so they have to do this and this and that. They lose themselves. But yet we are created as beautiful women that should support, right? So you need to take care of yourself. You need to look beautiful for your husband or your other, right? Or even for your family, to know that you're healthy, beautiful, and nothing is wrong with having that cushion of extra income. So I definitely encourage women to do home, right? This is something that she could do it at home. Invite women, do the facials, right? Do the dishes. Hey, see, looking, the grease is gone. Look at the scrubber. It's so easy. Our life is easy. Do the laundry detergent, right? And we're saving water, right? You don't have to rinse so much or use one scoop in the machine. Everything is easier and faster. So everything is a plus. Everything is positive. So yes, women, go out there and talk to your husband, say, support me so I can support you. Does that answer the question? ओके तो मेरा ये सवाल था मैडम से कि आपको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या कहना है, और इंडिया में इंडियन हाउसवाइफ को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, मींस एटॉमी, उससे क्या उनको फायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये आंसर बताया है कि जितने भी लीडर्स है हमारे, तो सभी लीडर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अपने वाइफ को भी साथ में लेके आइए, उनको भी सपोर्ट कीजिए, दोनों मिलके ये बिजनेस ग्रो कीजिए, तो ये अच्छा होगा। और इंडियन हाउसवाइफ है या है तो आप घर पे रहते हो, आप घर का काम करते हो, पर आपको अपने ऊपर सेल्फ केयर भी लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए, खुद पे लगाइए, सेल्फ केयर कीजिए खुद को, उससे इनकम भी बनाइए, बाहर आइए। उन्होंने एक कंपैरिजन बताया है कि अमेरिकन वुमेन एंड इंडियन वुमेन, तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिका में बहुत सारे सिंगल मदर्स है या डिवोर्सेस होते हैं, तो वहाँ के जो वुमेन है वो बाहर पढ़ती ही है और अपने लिए कुछ ना कुछ करती है। पर इंडिया में शी फाउंड दैट कि यहाँ पे थोड़ी से अलग है कल्चर, तो उनका ये कहना है कि हमें भी बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने लिए खड़ा रहना चाहिए। एटॉमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको घर बैठे बैठे भी आप इनकम कमा सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, और अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स का अगर नॉलेज हो तो आप अच्छे तरीके से मीन्स ये कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन लीडरशिप यहाँ वो देखना चाहेंगे, और सभी जो इंडियन वुमेन है उनके लिए ये मैसेज है कि आप बाहर आओ, और सभी जो लीडर्स है अभी एटॉमी में, तो प्लीज आपके वाइफ के साथ आप उनको सपोर्ट कीजिए कि वो आगे बढ़ के एटॉमी का बिजनेस करे और कंधे से कंधा मिला के वो चले। Okay, Eydie ma'am, my next question to you is, what is the importance of my life scenario, and does it really works? It does, absolutely it does, because when you think, right, oh, I want to do this today, or I want to do today, you don't know that life happens and you forget. When you write things down, you get to visualize it and see it. Oh, I'm supposed to do this. Or, once you forget, it just keeps, brings you to that point that, oh, I remember I wanted to do this. And then life scenario itself, it gives you a chance to analyze where you are, in a sense, right? Where am I? Okay. For example, our CEO says, what kind of car are you driving right now? Okay. What is your dream car? Where are you living right now? Okay. You might be living in a flat, but you want to have a, home with a land, or whatever it is. You want to support your mom, your kids, whatever it is, you have to write it down. Like Rakesh says, what you sow is what you say, or what you say, you sow. So being always, saying, hey, if you're not a diamond master or, sales master, say, you know what, I am going to be sales master. But our CEO said, forget the sales master, focus on diamond master, because if you shoot for the moon and fall on the star, it's still great, right? So say, I'm going to be a diamond master. Where's my true leader? So writing down your goal, how many people you're going to talk to, and what you're going to do. This is very important. Every day, 5 people, right? Call or go visit and share.
I'm not talking about sharing about, of course, product too, but your dream, and see what they're responding to you. And you're going to probe the question. You get to see what have they lost, right? And you're giving them encouragement. You know what? I think I have an answer for you. I think I have a hope for you. I think your dreams are going to be accomplished by doing this. And while you're visiting, always take peeling gel, because, you can put it on their hand, right? While they're talking and say, you know what, can I have your hand back? And you could really see the difference, right? So it's always product time, because you're coming there to visit, but then again, subconsciously, you're showing them your product and why it's effective, why it works, and they get to see before their eye, right? So life scenario, absolutely. Start putting your dreams and what you want to do and how much you want to make. My sales master is coming, right? Oh, I have to at least make 3 commissions, right? Or 2 commissions every week. And if you do that, you're going to be a semi-sales master. My goodness, it's okay. So you need to see what your plan is. Thinking it's going to go away. But when it's in front of you, it's going to make you do it. That's when the 8 core comes through. Very important. ओके सो मेरा ये सवाल था कि माय लाइफ सिनेरियो, अगर आप सबको पता हो कि एक एटॉमी में एक डायरी आती है माय लाइफ सिनेरियो की, जहाँ पे हमें लिखना पड़ता है हमारे विजन क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, हम कब तक अचीव कर पाएंगे, तो उसके बारे में ये सवाल था। तो उन्होंने इसका क्या महत्व, मेरा ये सवाल था कि इसका क्या महत्व है, माय लाइफ सिनेरियो का क्या महत्व है। तो उन्होंने बताया जब भी आप कोई गोल रखते हो या कोई विजन रखते हो, अगर आप वो लिख के लेते हो तो कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है कि मुझे ये अचीव करना है, और आप उस तरीके से काम करना शुरू कर देते हो। ओके, अगर आपने उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि अगर आपने ये लिखा हुआ है कि मुझे अभी अगले साल एक पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, और अगर आपने ये माय लाइफ सिनेरियो में लिखा है कि मैं इतने कमीशन या इतना इनकम में कमाना चाहता हूँ, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं अपनी ओल्ड कार, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा कि अगले साल मुझे, अगर आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा रहेगा कि नहीं, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अगले साल तक चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी है, उसके लिए कितने मुझे इस साल 3 कमीशन निकालने हैं, या मुझे अगर मैं सेल्स मास्टर हूं तो आगे जाना है, या मीन्स एजेंट हूं तो स्पेशल एजेंट बनना है। तो आप जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके विजन है, तो आप वो माय लाइफ सिनेरियो में लिख के लो। लिख के क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाते हैं, एंड हम वैसे ही एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे एडी मैडम ने मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ, शॉर्टली बता रही हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। और सेम उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, या ड्रीम जो भी है, आप इसका यूज कीजिए और ये वर्क 101% करता ही है। ओके, so over to you, Eydie ma'am. My next question is, what is the best initial way in Atomy to do the business? We can recommend the products, or directly we can start with the plan presentation. What should be our strategy at initial level? Initial level, it depends on what your lifestyle is, what your position is. Some people, they don't have anything to start with, okay? And some people, like me, I had little, so I went all in. It's all up to you. Like I said, this is your own business. You know, that's when the life scenario comes alive, right? What do I do? How do I want to start? With this Atomy, you could start without 1 penny. 1 penny, I mean, 1 rupee, and you know that. And one of the stories in Indonesia, one lady, she was, I think, like in 60s or 70s or something like that. She didn't have a penny in her name. Seriously, she was very poverty stricken, but a person gave her hope. She was selling 1 packet, just one, 1 small packet. She was going to the market selling that with a little, I guess, adding a little bit of money, right? And she would come back and buy another one and buy another one. Pretty soon she became a leader. That's what I'm saying. With Atomy, you don't need no credentials. If you have the passion and the belief in yourself, right, and the dream, let it flourish.
And that's when the sponsor or, who's, talking to them comes all about, giving them the hope. There's no discrimination in Atomy, right? There's no credential. Like I said, if they're breathing and they have a hope, it's possible. But people who wants to really work through it, make a little bit of investment, meaning that have some samples, go around, right? Talk to people. If you want to send your family some product, hey, this is my new business, try it, love it, use it. If you like it, guess what? You have to become a member and you have to buy for yourself. That's another way, right? That's what our CEO teaches. For me, I brought them into the center. I gave them the facial, right? I pamper them. And they've seen the results. So ladies are like, okay, I want this and this and that. But not everyone can afford everything, right? But one by one. So yes, sharing is the most important thing, but the desire has to be there. And don't think it's going to be overnight success. It's something just like bamboo tree. You water it for 5 years and they shoot up like crazy, after that, right? You got to kind of visualize your business, your hope, and your dreams. Like a popcorn, when you put in the microwave, it's not going to do nothing for 2 minutes, but that third minute, it's going to pop the whole bag of popcorn. So in the beginning, no, it's not going to happen. But guess what? Not giving up in Atomy is going to make you very, very successful. Every Imperial Master, when you hear their life story, they had nothing. They were bankrupt. They had to borrow money from their children, but they had the dream, they had the passion, and they were not afraid to work hard. Don't get me excited. No. Okay, that's great. मेरा जो सवाल था वो ये था कि इनिशियल लेवल पे जब भी हम एटॉमी शुरू करते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए डायरेक्टली प्लान प्रेजेंटेशन देना चाहिए या प्रोडक्ट पे शुरू करना चाहिए, लाइक आप प्रोडक्ट यूज करो फिर उसके रिजल्ट्स देखो, तो क्या होना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब इन्होंने ये दिया कि ये अपने प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है, अपने अपने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि सभी लोग एक लेवल पे नहीं होते। कोई लोग ऐसे रहते कि उनके पास, उन्होंने एक इंडोनेशिया के एक लेडी का एग्जाम्पल दिया कि उसके पास मीन्स वो इतनी ये नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए एक सैशे लेके वो सभी मीन्स एटॉमिक का एक सैशे लेके वो घूमती थी, बताती थी लोगों को, और ऐसे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया, पूरा एम्पायर। और वही अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स लेके आप लोगों तक जाओ, ज्यादा से ज्यादा बताओ, तो उन्होंने खुद ने ऐसा किया, एडी मैडम ने, कि खुद ने प्रोडक्ट्स लिए, उन्होंने फेशियल करके दिखाए लोगों को, उन्होंने प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से उनका बेनिफिट बताया, उस लोगों को एजुकेट किया कि इसका क्या फायदा है। उन्होंने खुद ने ऐसा किया है बिजनेस, और उन्होंने ये कहा है कि जो भी एक एग्जांपल देके उन्होंने बताया कि अगर मींस ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट एकदम से ही आप बूम कर जाए, ऐसा नहीं है। ये एक बैम्बू ट्री की तरह है, आप आज सो करो, उसको वाटर करो, उसको नरिश करो, 5 साल के बाद वो इतना बड़ा ग्रो इमीडिएटली हो जाएगा कि आप जस्ट देखते जाओगे। या जैसे पॉपकॉर्न्स रहते हैं, उन्होंने एग्जांपल देकर बोला कि अगर आप ये करते हो मींस डालते हो, तो ऐसे नहीं रहता कि इमीडिएटली वो पॉप कर जाए, कुछ देर के बाद ही वो पॉपकॉर्न्स खुल के आते हैं। तो उन्होंने कहा ये सब पॉसिबल है, पर आपको एक ड्रीम होना चाहिए, विजन होना चाहिए, और आपको एक पैशन होना चाहिए कि ये मुझे करना है। विजुअलाइज करो कि मुझे यहाँ तक पहुंचना ही है। अगर आप ऐसे बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो पाओगे इस बिजनेस में, और अच्छे हाइट आप ये करोगे। ये तो संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो अपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ये डिपेंड है, आप कैसे ये बिजनेस करना चाहते हो। So over to you, Eydie ma'am. My next question is, what message do you want to give to all the distributors, like who are getting disheartened soon if they don't earn, and why they need to keep patience in the journey, and what kind of some hidden opportunities are waiting for them? Would you like to explain this? Wow, this is the most dynamic question that I would love to answer, guys. Seriously, foremost, when you guys go
to your lineage. I know right now there's a lot of people who has a 0 PV, correct? Right? Mm. That is most important thing. With every time I see that, my heart crunches, because if they had at least 10,000 PV, which is like toothbrush, toothpaste, maybe laundry detergent, that's it, right? Anything could be possible, because even though they're not building, you could see the people underneath them with the PVs coming out, right? If they have a 0, they don't get nothing, nada, really nothing. That hurts me. So that should hurt you, sponsors and leaders, right? Because you see this, all this PV underneath them, but they have a 0 and they don't have a clue what is about to happen. Like you said, they don't know, you don't know what's going to happen. But when you make that call and say, look, you know what? Look at your lineage. I know you don't care about this, but I care. You need to at least get 10, 3 products. Because if you don't like it, I'll pay, I'll buy it back, whatever it takes, but you need to try my product. Come into my center, you need to brush your teeth, and you need your family. Get that 10,000 PV underneath them. Once that happens, then they accumulate all that PV one side. You could call them up again and say, look, you know what? You got 300,000 PV on your left leg, and you haven't done anything, right? You just use one product. If you really do this and focus, and this is what I'm building, you share your dream with them and see what they want out of their life, right? And say, if you have a friend or someone, put them on your right and, start building. It's going to give you, how do you make money? Just sharing your toothbrush and toothpaste that everybody uses. But that little equipment can make you multimillionaire. It's not going to make you instantly, but 5 years, you watch, you mark my word, if you don't give up and continuously using your product and loving it and using every product, even though you don't need it, you need to try it. I have men use women's sanitary product. You know why? They need to know how it works. You need to know your product. And some men needs it. Older people, they make mistakes, right? Because they can't find the bathroom quick enough. Guess what? It helps them. Anything, your tennis shoes, it stinks, right? So you put the liner, it works. So palmetto, men's product, we're all same. We're made same. We just have different parts somewhere, right? But every function is the same. So test it. It's all natural. It's not going to kill you. Another thing is that daily doses for healthy people. But if they're sick, tell them to take 2, 3, 4, 5. It doesn't matter. It's natural. They're going to get the benefit. I take 4 ilutin where there's only 1. I take 4 omega where you take only 2. I take 4 milk thistle because I just want to be healthy. Now that I know I need to take care of my health, because I got a lot to do for India. I got over 250 kids in India who I love and adore, right? I want to see them get married. I want them to have a good life, right? So I got a lot of things to do. So I have to keep myself healthy. And so do you. For your wife, your family, that's most important. So guys, go to your lineage. Find anybody has 0, call them. And if they don't, if they don't respond, call them again, because sooner or later, year later, their life will change. They're going to start listening to you. When you knock the tree once, it's not going to knock down, right? If you keep knocking and knocking, asking, it's going to fall with the hope and dream. And you got to show it works. When they look at you, they got to say, whoa, what happened to your face? When they look at your hair, they're going to say, whoa, what happened to your hair? When they look at how you look, whoa, something changed. This is Atomy. If you choose to build Atomy, look the part, be the part, and speak the part, and go crazy, like our CEO said, go crazy. Don't be embarrassed to carry around, peeling gel, saying, if you're in the bus stop, on the bus, train, whatever, have your testimony. And make sure you get their number or have a business card made so they know how to get a hold of you. You need to make some type of investment for your business. Something, okay? So guys, seriously, Atomy is nothing
like out there. You know, I have worked 40 years, right? And if I die, yes, I don't get to give my children nothing. But with Atomy, guess what? I'm building it for my children and for their children, because it's inheritable, right? And I didn't know about passive income. Now I do, even though I'm not out there. My team in India works. When they're sleeping, I'm working here. Our team is global. We are growing more and more during the pandemic than any other business. And soon we're going to have a personal platform. New products are coming. The world is yours, guys. The world is yours. Just don't give up and do your diligence. Write your life scenario. Talk to your sponsor. Everything that you do is gonna pay off. Trust me. And it works. I was nothing. I became a sales master. I became diamond master. I became a, Sharon Rose master. This year, I am going to be a star master, guys. Got it? Star master. Because I have to go Sharon Rose master 3 times because could apply, right? So yes, I'm gonna do it. I'm going to do it. And so you guys have to make a commitment, right? And do the challenge. Don't be in the comfort zone, guys. Get scared, okay? I'm going to do this. I'm going to go to semi or go to sales master. Give everything that you got. Everything that you got. And talk to your sponsor and your leaders. Say, I want to do this. Let's do it together. With Atomy, you cannot do it alone. It's all about teamwork, organization, talking to people, relationship. It's not an Atomy, it's a relationship we are building. Relationship, guys, okay? But get out of the comfort zone. Comfort zone is not acceptable. In the word, trying is not acceptable. With Atomy, you're gonna do it, then you're gonna do it. If you're not gonna do it. No, I'm gonna try, I will, yeah, I may. No, trying is not gonna happen in Atomy. That's what I teach my team. Please don't use that trying thing. That means absolutely, that means no. Just say no. Why say try? But if you're going to do it, let yes be yes and give it everything that you got. Everything, it will come through. So challenge yourself to become diamond master, sales master, and so on. And semi-sales master going to bring a lot of sales masters out there. So leader who is diamond, you focus on Sharon. Sales master, you focus on diamond. It will happen. You see everyone moving up. It does work. Just don't give up. And I love you guys. Thank you so much. I know we're going over, but I could go on and on and on. Seriously, I could talk to you guys for 10 hours straight and I will be tired. You're absolutely amazing, ma'am. The positive energy, the positive aura which you have. You're absolutely amazing leader. मेरा मैडम से ये सवाल था कि जो इनिशियल लेवल पे आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? और मींस काफी हद तक लोग अगर बिजनेस नहीं होता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो पेशेंस कैसे रखें और जर्नी में आगे कैसे बढ़े? ये मेरा सवाल था एडी मैडम से. तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया है कि मीन्स वो जब अपनी टीम के लिनिएज में देखती है कि जिसके 0 पीवीज है या कोई पीवीज नहीं कर पा रहा, जो भी दिक्कत है, तो उनको वो बहुत बुरा लगता है. वो खुद से सबको कॉल करती है, सबसे पूछती है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो बिजनेस, क्या प्रॉब्लम है. तो हर एक मेंबर के साथ वो, और उन्होंने ये भी बताया, इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस. Atomy business is about the relation. Okay, आपके टीम मेंबर्स के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे आपको साथ में बढ़ना है, और आप अकेले नहीं बढ़ सकते, आपको टीम को लेके ही बढ़ना है, तभी आप कुछ अचीव कर पाते हो. उन्होंने और एक बताया कि उनके टीम मेंबर्स जब बोलते हैं कि नो आई एम ट्राइंग और आई एम डूइंग, तो ऐसा नहीं चलता एटॉमी में. आप मींस जस्ट से नो, अगर नहीं होता तो नो बोलिए. ट्राइंग से कुछ नहीं होता, आपको वो अचीव करना ही है. सो मैडम डू टेल देयर टीम मेंबर्स लाइक आपको अचीव करना ही है, ट्राइंग से कुछ नहीं होता. और आपको मींस पागलपन के हद तक जाना पड़ेगा अगर आपको ये अचीव करना है, एटॉमी में आगे बढ़ना है. यू हैव टू ईट, ड्रिंक, स्लीप एटॉमी, तभी कुछ हो पाएगा. सिर्फ ट्राइंग से कुछ नहीं होगा.
अगर आपके और अगर कुछ ऐसे मेंबर्स है जो आपके ज्वाइन है पर उन्होंने कुछ पीवीज नहीं किए हैं, तो 1-to-1 आप कॉल कीजिए, उनको बताओ कि एटलीस्ट आप डेली रूटीन के जो प्रोडक्ट्स है लाइक टूथपेस्ट ब्रश है, एटलीस्ट वो परचेस करो, वो यूज करके देखो, बहुत ही अच्छे हैं। तो सबके पीवीज पहले करवा के लो, टीम में जितने भी मेंबर्स है। और सेकेंड उन्होंने बताया कि वो खुद मीन्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट सभी यूज करती है, क्योंकि उनको मीन्स उनको ऐसा लगता है कि मैं एनर्जेटिक होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आगे जाके बहुत सारा काम करना है, मेरी टीम को देखना है। तो वो बोल रही है कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट सभी को एटॉमिक यूज करने चाहिए, सो दैट इफ अगर आप हेल्दी हो तभी आप आगे बढ़ के जो भी आपने एम्पायर खड़ा किया है वो आप बढ़ा पाओगे, वो संभाल पाओगे और लोगों को भी हेल्प कर पाओगे। तो आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी लीजिए, ऐसे उन्होंने कहा है। और वही है कि मीन्स कीप गोइंग, पेशेंस लूज मत कीजिए, वर्क ऑन इट। और बिजनेस मैंने देखा है कि होता है बिजनेस इनिशियल ईयर्स में थोड़ी डिफिकल्ट रहता है, पर जैसा ही ग्रो होता है बिजनेस तो सभी अचीवमेंट्स, आप जो भी आपने ड्रीम किया था वो सब अचीव हो सकता है। और आप विजन रखो, अगर इस साल मैडम का अभी ये विजन है कि वो शेरॉन रोज मास्टर है, तो अगले साल वो स्टार मास्टर होने वाली है। तो उन्होंने एक गोल सेट करके रखा है अपने लिए कि मुझे ये करना है। वैसे ही उन्होंने हमें भी बताया है कि हमें भी ऐसा एक विजन या गोल सेट करना चाहिए कि इस साल में एक मास्टरशिप आगे जाने ही वाला हूँ या वाली हूँ, और मैं वो अचीव करने ही वाली हूँ। तो ये सभी को अप्लाई करना चाहिए, इसे उन्होंने बताया है। So this was wonderful session, Eydie ma'am. It was great talking to you, and you're truly a role model for everyone, not only women but for everyone. Truly inspiring, and thank you for enlightening with this your knowledge, practical knowledge, and the positive energy, for giving us that positive energy. And thank you so much. I enjoyed interviewing you, and it was great session. It was great session, and hope to meet you in person. If I get a chance, I would definitely would love to meet you. Thank you so much, Eydie ma'am. Thank you so Over to much you, for inviting me. Rakesh Kumar sir and Ritesh sir. Right. Thank you so much. Thank you so much, Eydie ma'am, or the kind of information, the level of knowledge you have. I mean, this is a salute I'm giving you, right? For your qualification, for your knowledge about this business, you are truly amazing. एंड जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं रितेश जी से मैं कहूंगा कि इस मीटिंग को हम लोग अब चूंकि टाइम काफी निकल गया है, और एक चीज याद रखना, मैं देखिए समय, जब लीडरशिप की बात होती है, जब लीडर्स कुछ कहता है तो समय घड़ी की तरफ देखना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सीख लें, राइट? और ये 11 बजे 2 बजे 3 बजे कुछ से फर्क नहीं पड़ता है, राइट? और मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ AITF ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स की तरफ से, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने इतना समय पेशेंस लेके हमारे साथ कनेक्ट हुई, एडी मैम को स्पेशल थैंक्स, आपने समय निकाल के हमारे पास हमारे साथ कनेक्ट हुए। एंड फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस इवेंट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रितेश रंगारे जी, प्लीज आप आए और इस सेशन को क्लोजिंग मोड पे लेके चले हम लोग। All right, thank you so much, Eydie ma'am. This was one of the most powerful session I have ever. Because the kind of knowledge you have and the energy, I mean, everything is outstanding, right? So thank you so much for enlightening us with your knowledge and practical session, because everything, each word, I mean, जो भी आपने बोला है, जो भी सारे शब्द बोले हैं, right? सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा encourage करती है, right? In this age, you are doing this phenomenal job, and we are getting inspired by you, and I think most of the leaders, जितने भी हम सभी लोग आपको देखते हैं, लगातार आपको फॉलो करते हैं, we are really get inspired from you. So thank you so much for this quality and wonderful session. I'll invite each and everyone to clap for you. मैं सभी लोगों को एक बार अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगा और एक बार जोरदार क्लैपिंग अनम्यूट तो करो। I will not take thank you so much for this wonderful session. Anytime, I'm always here for all of you. Just know that, right?
Great, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। आई होप जितने भी लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन किए हैं हमने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज ये है प्रैक्टिकल ग्राउंड, और ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एडी मैम ने अपना एक पूरा बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है, और किस तरीके से वो जनरेशन टू जनरेशन इसे पास ऑन करने वाली है, राइट। सो इस चीज के लिए उतनी ही मेहनत उन्होंने की है। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। हर कोई व्यक्ति एक शॉर्टकट तलाशता रहता है, राइट। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरा एक बना बनाया बिजनेस जो है वो चल जाए। ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक टाइम, समय लगता है, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो रिजल्ट सबसे बड़ा, जो एडी मैम है इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, इस लेवल का रिजल्ट निकल के आता है। और क्या एनर्जी है, आई मीन इस लेवल की एनर्जी मैंने अच्छे अच्छे लोगों में नहीं देखी है। इतना मॉर्निंग 6:30 से आप अपने एजुकेशन सेंटर में रहते हैं, 6:30 से आप जो है अपने एजुकेशन सेंटर को लीड कर रहे हैं, लीडर्स में जो आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग मैम। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड ऑलवेज हमें इसी तरीके से जो है मेंटोर करते रहिए, सिखाते रहिए। वी आर रेडी टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच अगेन, एंड वी विल क्लोज दिस सेशन विद आवर कंपनी मोटो, जो मैं स्टार्टिंग में भूल गया था, बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस हर। सो वी विल क्लोज दिस सेशन विद कंपनी मोटो। आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू, राइट? आर यू रेडी फॉर द कंपनी मोटो? Yes. 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 All right. Here is the spirit. Create the Create the vision. spirit. Create the vision. Follow the vision, follow the faith, serve humanity. Let's Come on, let's do it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, all participants. Thank you so much, प्रियंका देशमुख जी, आपने बहुत शानदार आज के इवेंट को किया है। ये मैं बात जबरदस्त। जो है वो ऐड ऑन करना चाहूंगा, प्लीज मैं भूल गया था। ये जो आज हुआ है, दिस वाज हिस्टोरिक कंप्लीटली, बिकॉज राकेश सर एंड प्रियंका मैम ने जो इंटरप्रिटेटर की भूमिका निभाई है, आई मीन मैंने इस लेवल पे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक से एक चीज आपने जिस तरीके से डिलीवर किया है, एक एक शब्द, और प्रियंका मैम को देख के तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि जो मैंने सोचा था उससे ये 1000 टाइम ज्यादा बेटर था। तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से हम सभी को एक एक कंटेंट, एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक लाइन प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने के लिए, और ये बिल्कुल आप ही कर सकते थे, एंड यू वर द परफेक्ट host for this session. Thank you so much इस चीज के लिए, and we will close this session. And once again, thank you so much, Eydie ma'am, all participants. आप unmute कर दीजिए। Thank you. You guys have a great evening. Thank you so much for staying up. Love you guys. Thank you so much, ma'am. Thank you. Take care. Goodbye. So much, ma'am. Love you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. Good night.